एग रिलीज नहीं होता, यानी सप्रेस्ड ओव्यूलेशन की वजह से हमल ठहरने में दुश्वारी होती है। अनोव्यूलेशन अस्सलाम वालेकुम। हिर्सुटिज्म क्या है? ख़वातीन में बालों का गैर ज़रूरी इजाफा जो चेहरे या जिस्म पर ज़ाहिर हो, इसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिर्सुटिज्म क्या है? ख़वातीन में बालों का गैर ज़रूरी विरलाइजेशन एक ऐसी हालत है जिसमें ख़वातीन में मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है। इसकी अलामात को समझना ज़रूरी है। कोल्पोस्कोपी एक मुआयना है जिससे हम बच्चादानी का मुआयना करते हैं। ये एक ख़ास खुर्दबीन से किया जाता है। डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज या डीएनसी एक मुख्तसर प्रोसीजर है। इसमें बच्चादानी के रास्ते को फैलाया जाता है और बच्चादानी की अंदरूनी तह को साफ किया जाता है। आज हम मायोमेक्टमी के बारे में बात करेंगे। मायोमेक्टमी एक सर्जिकल तरीकाकार है जिसके ज़रिए रहम से रसूलियों को निकाला जाता है। इसे मायोमेक्टमी कहते हैं। आज हम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ्रेक्टमी एक सर्जिकल तरीकाकार है जिसमें औरत की एक या दोनों बैज़ादानियों को सर्जरी के ज़रिए निकाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ्रेक्टमी एक सर्जिकल तरीकाकार है जिसमें औरत की एक या दोनों बैज़ादानियों को सर्जरी के ज़रिए निकाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। साल्पिंजेक्टमी क्या है? इसमें फ्लोपिन ट्यूब्स को सर्जरी के ज़रिए निकाल दिया जाता है। ट्यूबल लाइगेशन एक मुस्तकिल तरीका है जिसमें औरत की फ्लोपिन ट्यूब्स को बंद किया जाता है ताकि हमल को रोका जा सके। ये एक महफूज और आम ऑपरेशन है। ओडोंटोजेनिक सिस्टस क्या होते हैं? ये ऐसे थैले हैं जो जबड़े की हड्डी में बनते हैं और इनका ताल्लुक दांतों की नश्वोनुमा से होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरिथ्रोप्लाकिया के बारे में बात करेंगे। एरिथ्रोप्लाकिया मुंह के अंदर एक सुर्ख धब्बा होता है। आसानी से कोई और वजह मालूम नहीं हो पाती। ये बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ल्यूकोप्लाकिया के बारे में बात करेंगे। ये मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे होते हैं जो आसानी से साफ नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। ओरल कैंडिडाइसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपके मुंह के अंदर होता है। इससे जुबान पर सफ़ेद धब्बे बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इम्पैक्टेड टीथ क्या होते हैं? टीथ क्या होते हैं? जब कोई दांत मसूड़े से बाहर नहीं निकल पाता तो उसे इम्पैक्टेड टीथ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। आज हम एनिमल हाइपोप्लीजिया के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी में दांतों की बैरूनी तह बारीक हो जाती है जिसकी वजह से दांतों पर दाग पड़ जाते हैं। मैलोक्लूजन का मतलब है दांतों का गलत मिलाव। जब आपके ऊपर और नीचे के दांतों का आपस में रब्ता ठीक ना हो तो इससे मैलोक्लूजन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइपोडोंटिया के बारे में बात करेंगे। हाइपोडोंटिया एक ऐसी हालत है जिसमें कुछ दांत पैदाइशी तौर पर मौजूद नहीं होते। ये मसला दूध के दांतों या मुस्तकिल दांतों दोनों में हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। हाइपोडोंटिया क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपके मुंह में मामूल से ज्यादा दांत उगने लगते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए। टूथ एट्रेशन क्या है? आइए जानते हैं। जब दांत आपस में रगड़ खाते हैं तो उनकी ऊपरी सतह आहिस्ता आहिस्ता घुस जाती है। इसे हम टूथ एट्रेशन कहते हैं। टूथ एब्रेजन क्या है? जब आप गलत तरीके से ब्रश करते हैं तो दांतों की बैरूनी सतह रगड़ खाती है। इसे टूथ एब्रेजन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी हालत है जिसमें रहम के अंदरूनी खलियात बाहर बढ़ने लगते हैं। ये शदीद दर्द का बायस बन सकता है। टूथ एरोजन क्या है? जब तेजाबियत की वजह से दांतों की बैरूनी सतह पिघल जाए तो उसे टूथ एरोजन कहते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस क्या है? ये दांतों की एक ऐसी हालत है जो बचपन में फ्लोराइड के ज़्यादा इस्तेमाल से होती है। इससे दांतों पर दाग पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेरिकोरोनाइट्स के बारे में बात करेंगे। ये दाढ़ के गिर्द मसूड़ों की सोजिश है जो अक्सर अकल दाढ़ की वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेरिडोनटाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये मसूड़ों की एक संगीन बीमारी है जिससे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेंटल एब्सेस के बारे में बात करेंगे। डेंटल एब्सेस दरअसल दांतों में उबलते हुए पीप की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन की वजह से पेट होने वाली सूजन है। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। आज हम पल्पाइटिस के बारे में बात करेंगे। दांतों के अंदरूनी हिस्से में सोजिश को पल्पाइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। डेंटल कैरीज, जिसे हम आम जबान में दांतों का कीड़ा भी कहते हैं, ये असल में बैक्टीरिया की वजह से दांतों की सड़न का अमल है जो आपके दांतों की परतों को मुतासिर करता है।
मेनोपॉज वो वक्त है जब खवातीन में माहवारी का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर रुक जाता है। ये एक कुदरती अमल है। आज हम हिस्टेरेक्टोमी के बारे में बात करेंगे। हिस्टेरेक्टोमी एक सर्जिकल तरीकाकार है जिसमें औरत के रहम को निकाला जाता है। मजीद मालूमात के लिए डॉक्टर से रुजू करें। रसूली क्या होती है? ये रहम में गैर मामूली इजाफा है। ये अक्सर कैंसर नहीं होती। इसे फाइब्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो खवातीन की सेहत के लिए बहुत अहम है। ये उनके जिस्म में कई अहम तब्दीलियां लाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम हूँ। आज हम डेस्पेरोनिया के बारे में बात करेंगे। डेस्पेरोनिया का मतलब है जिनसी मिलाप के दौरान दर्द होना। ये एक काबिले इलाज मसला है। आमेनोरिया का मतलब है हैज का ना आना। अगर 3 महीने तक पीरियड्स ना आए तो डॉक्टर से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम ओलिगोहाइड्रामनियोस के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि हमल के दौरान पानी कम हो गया है, जो बच्चे की नाशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम पॉलीहाइड्रामनियोस के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि हमल के दौरान ना पानी की मिकदार का मामूल से ज़्यादा होना। मेनोरेजिया का मतलब है हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा या गैर मामूली बहावों का होना। ये एक काबिले इलाज मसला है। प्लेसेंटा अक्रीटा एक संजीदा हालत है। इसमें प्लेसेंटा रहम की दीवार में बहुत गहराई तक चला जाता है। ये जचगी में पेचीदगी का बायस बन सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? इसमें प्लेसेंटा बच्चादानी के निचले हिस्से में होता है और ये बच्चादानी के रास्ते को ढांप लेता है, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? इसमें हमल बच्चादानी के बाहर ठहर जाता है। ये एक पेचीदा तिब्बी सूरत हाल है। इनफर्टिलिटी से मुराद क्या है? अगर कोई जोड़ा 1 साल तक कोशिश करे और फिर भी हमल ना थे तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। बीमारी क्या है? जब जिस्म मामूल के मुताबिक काम ना करे तो उसे हम बीमारी कहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्ट्रासाउंड एक जदीद मेडिकल टेस्ट है जिसमें साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं। ये वेव्स जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर बनाती हैं। इससे बीमारियों की तशखीस होती है। पब्लिक हेल्थ का मतलब है बीमारियों से बचाव और सेहत को हर फर्द के लिए बेहतर बनाना। इसमें हम पूरे मुआशरे की सेहत का ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री दरअसल शाख है जो जानदारों के अंदर होने वाले केमियाई अमूर का मुतालिया करती है। I'm Dr. Aisha. Jaundice is a condition. It causes yellowing of the skin and eyes है जिससे बिलिरुबिन की जिल्द और आंखें पीली हो जा से होता है। हमेशा अपने डॉक्टर से रजू करें हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी छोटे जानदारों का मुतालिया है जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। इसमें बैक्टीरिया और वायरस शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आमना हूँ। आज हम पैथोलॉजी पर बात करेंगे। पैथोलॉजी दरअसल बीमारियों का मुतालिया है। इसमें हम बीमारियों की वजूहत का जायजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी क्या है? ये अद्वियात का मुतालिया है कि वो जिस्म पर कैसे कैसे असर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिजियोलॉजी में हम जानदार खालियों के अफ़ाल का मुतालिया करते हैं, यानी कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे काम करते हैं। ये जिस्म का निज़ाम समझने में मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम। एनाटमी वो इल्म है जिसमें हम इंसानी जिस्म की साख्त का मुतालिया करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर फिट होने का नाम है, जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर। तभी हम वाकई सेहतमंद कहलाते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? प्रेगनेंसी के 24 हफ्तों के बाद माँ को उनको होने वाली ब्लीडिंग को एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। प्रीक्लैम्सिया प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। इसमें पेशाब में प्रोटीन और दूसरे आज़ा मुतासिर हो सकते हैं। ये आम तौर पर 20 हफ्ते के बाद होता है। क्या आप जानते हैं कि एक्लेम्शिया क्या है? हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना और उसके साथ दौरे पड़ना एक्लेम्शिया कहलाता है। Diabetes is a type of high blood sugar. It develops during pregnancy. In women who did not have diabetes before, it usually shows up in the middle or later part of pregnancy. What is postpartum hemorrhage? It is defined as a blood loss of more than 500 milliliters following a vaginal delivery.
In medicine, shock is defined as a life-threatening condition. It occurs when the body is not getting enough blood flow to maintain its vital organs. Epilepsy is a central nervous system disorder. It is characterized by recurrent seizures. These are caused by abnormal brain activity. Anemia is a condition where your body lacks enough healthy red blood cells. This means your organs don't get enough oxygen to function properly. Hello everyone. Ciprofloxacin is an antibiotic. It is used to treat various bacterial infections. Always consult your doctor before use. An MRI or magnetic resonance imaging is a non-invasive medical imaging test that produces detailed images of your organs using strong magnetic fields and radio waves. Amoxicillin is a widely used antibiotic. It belongs to the penicillin class. It fights various bacterial infections. Always take it as prescribed. Hello, I'm Dr. Aisha. Cefixime is an antibiotic medication. It belongs to the cephalosporin class. It is used to treat various bacterial infections. Antibiotics are medicines. They fight bacterial infections. They do this by killing the bacteria or by keeping them from copying themselves. A seizure is a sudden, uncontrolled electrical disturbance in the brain. It can cause temporary changes in awareness, movements, or feelings. Hello, I'm Dr. Alia. Antenatal care is the care you receive from health professionals during your pregnancy. It helps keep you and your baby safe. Hello, I am Dr. Khan. Today we will define ibuprofen. It is a common medication used to treat pain and fever. Paracetamol is a very common medication. It is used to treat pain and reduce a high fever. It's also known as acetaminophen. Thrombocytopenia is a condition where you have a low blood platelet count. Platelets help your blood to clot. Thrombosis is the formation of a blood clot inside a blood vessel. This clot can block the normal flow of blood and cause serious problems like heart attacks. Rabies is a fatal but preventable viral disease. It spreads to people through the saliva of infected animals, usually following a bite or a scratch. It directly attacks the nervous system. Collagen is the most abundant protein in your body. It acts like a scaffold that holds everything together, giving strength and structure to your skin and joints. Hello, I'm Dr. Aisha. Biotin, or vitamin B7, helps your body convert food into energy. Hello, I'm Dr. Anya. Today, let's define apoptosis. It is a form of programmed cell death. This process removes unwanted cells. Hello, I'm Dr. Khan. Today, we are defining atrophy. It's the decrease in size of a body part or tissue. This can happen due to a lack of use. I hope that helps. Hyperplasia is defined as an increase in the number of cells in an organ or tissue, making it grow larger. Hello, I am Dr. Maha. Let's define hypertrophy. It is the increase in the size of cells leading to an increased organ volume. कार्डियोलॉजी क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ। ये दरअसल दिल का मुतालिया है, जिसमें हम दिल की बीमारियों और उसके इलाज पर बात करते हैं। एट्रियम दिल के ऊपरी हिस्से का एक खाना है। ये खून को वसूल करता है और उसे नीचे भेजता है। बिजने और उसे नीचे भेजता है। वेंट्रिकल्स दिल के नीचे वाले चैम्बर्स को कहते हैं, जिनका काम खून को पंप करना है। ये जिस्म के बाकी हिस्सों में खून भेजते हैं। सेप्टम दरअसल एक दीवार को कहते हैं, जो दो खलाओं को दरमिया से अलग करती है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एंडोकार्डियम के बारे में बात करेंगे। ये दिल की सबसे अंदरूनी तह होती है, जो दिल के चेम्बर्स की हिफाजत करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। मायोकार्डियम दिल के पट्टों को कहते हैं। ये दिल की दरमियानी और अहम तह है। इसका काम खून को पंप करना है। देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेरिकार्डियम एक डबल लेयर्ड थैली है, जो आपके दिल को चारों तरफ से घेरे रखती हैं। ये दिल की हिफाजत करती है। एओर्टा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी शरियाँ है। ये दिल से साफ खून बाकी जिस्म तक पहुँचाती है। इसका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
पल्मोनरी आर्टरी वो खून की नाली है जो दिल से डीऑक्सीजनेटेड खून को ऑक्सीजन हासिल करने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। पल्मोनरी वेन्स वो रेजें हैं जो सफ़ेद खून को फेफड़ों से दिल के बाएं हिस्से में लाती हैं। ये जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एओर्टा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी शरियां है। ये सुपीरियर वेना केवा एक बड़ी राग है। ये जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से खून को दिल तक पहुंचाती है। इंफीरियर वीना केवा हमारी जिस्म की एक अहम राग है। ये जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल तक पहुंचाती है। कोरोनरी आर्टरीज वो खून की नालियां हैं जो दिल के अज़लात को खून पहुंचाती हैं। इनमें रुकावट दिल के दौरे का बायस बन सकती है। Hello, I'm Dr. Alia, and today we are exploring human anatomy. Coronary veins are crucial vessels that drain deoxygenated blood. They return it directly from the heart muscle back into circulation. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। माइट्रल वॉल्व हमारे दिल का एक अहम हिस्सा है। ये खून के बहाव को बरकरार रखता है। ये बाएं एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ट्राइक्सपिड वॉल्व आपके दिल का एक अहम वॉल्व है। ये दाएं एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ये खून के बहाव को दुरुस्त रखता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। माइट्रल वॉल्व हमारे दिल का एक अहम हिस्सा है। ये खून के बहाव को बरकरार रखता है। ये बाएं एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ट्राइक्सपिड वॉल्व आपके दिल का एक अहम वॉल्व है। ये दाएं एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ये खून के बहाव को दुरुस्त रखता है। एओर्टिक वाल्व हमारे दिल का एक अहम हिस्सा है। ये खून को दिल से जिस्म तक पहुंचाता है। इसमें खराबी से सेहत मुतासिर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, पल्मोनरी वॉल्व के बारे में बात करेंगे। पल्मोनरी वॉल्व इंसानी दिल के 4 वाल्व्स में से एक हैं। ये खून को दिल से फेफड़ों तक पहुंचाता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम सिस्टोल को समझेंगे। जब दिल के पैताएं सुकारते हैं तो उसे सिस्टोले कहते हैं। वालेकुम, आज हम डायस्टोल को समझेंगे। जब दिल के मसल्स आराम करते हैं और खून चैम्बर्स में भरता है तो इस रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कार्डियक आउटपुट से मुराद खून की वो मिकदार है जो दिल 1 मिनट में पंप करता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है। स्ट्रोक या फलिज क्या है? जब दिमाग के हिस्से में खून की रवानी रुक जाती है तो हिस्से में खून की रवानी रुक जाती है तो इसे स्ट्रोक कहते हैं। सीपीआर क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। जब किसी का दिल या सांस रुक जाए तो ये किया जाता है। इसमें सीने को दबाना और मसनूई सांस देना शामिल है। पीसमेकर एक छोटी सी डिवाइस है जो दिल की धड़कन को बाकायदा बनाती है। ये दिल के मरीजों के लिए है जिनकी धड़कन कम हो जाती है। डेब्रिलेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हम दिल की बेतरतीब धड़कन को बिजली के झटके के जरिए ठीक करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी, जिसे इको भी कहते हैं, दरअसल दिल का अल्ट्रासाउंड है। ये टेस्ट दिल की तस्वीर दिखाता है जिससे दिल के वॉल्व्स का मुआयना होता है। इस्कीमिया क्या है? जब जिस्म के किसी हिस्से में खून की सप्लाई में कमी हो जाए तो उसे इस्कीमिया कहते हैं। एनोरिज्म क्या है? आइए जानते हैं। ये शरियान की कमजोरी है जिससे वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ब्लड प्रेशर उसकी बड़ी वजह है। अपना ख्याल रखें। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? इसमें आपकी शरियानों के अंदर चर्बी जमा हो जाती है जिससे खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। मायोकार्डाइटिस क्या है? ये दिल के पट्टों की सोजिश है जो आमतौर पर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इससे दिल कमजोर हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस दिल के अंदरूनी अस्तर की सोजिश है। ये आमतौर पर इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि बहुत संगीन हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस क्या है? ये दिल की बैरूनी झल्ली की सूजिश है जिससे सीने में शदीद दर्द हो सकता है। इसकी बरवक्त तशखीस ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा हूँ। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक भी कहते हैं, रुक जाते हैं, ये उस वक्त होता है जब दिल के निज़ाम में खून की रवानी रुक जाती है। एंजीना पेक्टोरिस दरअसल सीने में दर्द या बेचैनी को कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब दिल के उआज़लात को ऑक्सीजन राशि मुनासिब मिकदार में नहीं मिलती।
कार्डियोमायोपैथी दिल के पट्टों की एक बीमारी है जिसमें दिल को खून पंप करने में मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेकीकार्डिया के बारे में बात करेंगे। जब आपके दिल की धड़कन मामूल से तेज हो जाती है, यानी 100 बीट से ज्यादा, तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ब्रेडीकार्डिया का मतलब है दिल की धड़कन का सुस्त होना। अगर आपके दिल की धड़कन 60 से कम है तो उसे हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एम्बोलिज्म को समझेंगे। जब खून की नाली में कोई बैरूनी चीज फंस जाए तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम Our topic today is side effect versus adverse effect. Why do I feel worse after taking drugs? Have you ever taken a drug and instead of feeling better immediately, you felt worse? Yes. Does that always mean the drug is not working? Imagine you have malaria. Before taking your antimalarial, you only feel slight dizziness and weakness. Then you take your medication. Suddenly. You begin to have more dizziness, more sleepiness, more headache, more nausea. This leads us to side effect. A side effect is a secondary unintended effect of a drug that occurs in addition to the desired effect. It may be mild, expected, and sometimes even useful. Imagine you buy a new phone. You bought the phone mainly because you want a good camera. Your main reason for buying the phone is taking clear pictures. The camera works perfectly. But after using it, you notice that the phone gets slightly warm. Battery drains faster. You did not buy the phone because of those things, but they happen as extra effects. This is like a side effect. The drug is doing its main job, but it produces additional effect. And this additional effect is the reason why you begin to have more dizziness, more drowsiness, more headaches, more nausea, more fever when taking a medication. And when people who do not have the knowledge about side effects begin to encounter side effects while on a medication, they dump and stop their medication thinking that the medication is making their sickness worse, not knowing that those side effects are just your body's response while the medicine is doing its job. Now let us understand adverse effect. An adverse effect is a harmful or unwanted reaction caused by a drug that may be severe enough to require medical attention, dose change, or stopping the medication. Using the same phone example, imagine the phone does not just become slightly warm. It overheats badly and shocks you whenever you touch it. The battery damages, it becomes dangerous to use. Now, it is no longer a small extra inconvenience. It is causing harm. This is an adverse effect, a harmful, unwanted, or potentially dangerous effect of a drug. This may require medical attention, changing the dose, or stopping the medication. Any questions? Ask your questions. So does having a side effect mean the drug is bad or not working? No, not necessarily. Side effects are secondary, not the main purpose of the drug. Our topic today is side effect versus adverse effect. Why do I feel worse after taking drugs? Have you ever taken a drug and instead of feeling better immediately, you felt worse? Yes. Does that always mean the drug is not working? Imagine you have malaria. Before taking your antimalarial, you only feel slight dizziness and weakness. Then you take your medication. Suddenly. You begin to have more. In today's class, we shall be discussing gram-positive and gram-negative bacteria. Let's quickly define and compare these two terms. Gram-positive bacteria are bacteria that have a thick peptidoglycan cell wall which allows them to retain the purple color during gram staining. Let's say bacteria are people living in a cold environment. Different people wear different types of protection. Now, imagine someone wearing a very thick sweater, but no extra raincoat. During gram staining, the purple dye is like paint poured on the sweater. The thick sweater absorbs and holds the purple paint strongly. After washing, the person is still purple. This is gram-positive bacteria. They retain the purple crystal violet stain during gram staining because they have a thick peptidoglycan cell wall. They appear purple under the microscope. Examples of gram-positive bacterial are Staphylococcus, Streptococcus, and Bacillus. Now let us understand gram-negative bacteria. Gram-negative bacteria are bacteria that have a thin peptidoglycan cell wall and an outer membrane, so they do not retain the purple stain but take up the counter stain and appear pink or red. Imagine another person wearing
A very thin sweater, but a protective raincoat on top. When purple paint is poured, the thin sweater cannot hold much paint. During washing, the purple color comes off. Then a second pink-red paint is added, and the person takes that color instead. This is gram-negative bacteria. They have a thin peptidoglycan cell wall and an outer membrane, so they do not retain the purple stain but take up the counter stain and appear pink or red. And note that their outer raincoat makes many gram-negative bacteria harder for some antibiotics to attack. Examples are E. coli, Salmonella, Neisseria, Pseudomonas. So do you have any questions? Sir, please, what do you mean by gram staining? Gram staining is a laboratory technique used to classify bacteria into two major groups based on the structure of their cell walls. Sir, why are they called gram-positive and gram-negative? They are named based on how they react during gram staining. Gram-positive bacteria keep the purple stain, while gram-negative lose the purple stain and appear pink-red after the counter stain. Sir, what is peptidoglycan? Peptidoglycan is a strong material that forms part of the bacterial cell wall. It helps bacteria maintain their shape and protects them. Think of it as the bacteria's protective sweater. Sir, if gram-positive has a thick wall, why does gram-negative sometimes resist antibiotics more? Gram-negative bacteria have an extra outer membrane, like a protective raincoat. This can prevent some antibiotics from entering easily. Sir, are gram-negative bacteria always more dangerous than gram-positive? Not always. Both groups can cause serious infections. Their danger depends on the specific bacterial infection site and patient condition. In today's class, we shall be discussing gram-positive and gram-negative bacteria. Let's quickly define and compare these two terms. Gram-positive bacteria are bacteria that have a thick peptidoglycan. Our topic today is bactericidal versus bacteriostatic. Let's define and compare these two antibiotics effects. Bactericidal antibiotics are antibiotics that directly kill bacteria by destroying important structures or processes the bacteria need to survive. Now, imagine your body is like a house. Bacteria are like rats that entered the house and started destroying things. There are two ways we can control these rats. Imagine calling a pest control team. They enter the house with weapons designed to kill the rats. They attack the rats directly. They destroy their shelter, damaging bacterial cell wall. They attack their vital functions, disrupting bacterial processes. The rats die and their population reduces quickly. This is bactericidal. Examples of bactericidal antibiotics are penicillins, cephalosporins, aminoglycosides, fluoroquinolones. Now that you have understand bactericidal, let us explain bacteriostatic antibiotics. Bacteriostatic antibiotics are antibiotics that do not directly kill bacteria. Rather, they stop bacteria from growing and multiplying, allowing the immune system to remove them. Another pest control team enters, but instead of killing the rats immediately, they separate the female and male rats and place them in a different cage. They block their food supply. They stop their ability to reproduce. The rats inside may still be alive, but they cannot multiply. Then the house owner and cleaners, which represent the immune system, come and gradually remove the rats. This is bacteriostatic. Examples bacteriostatic are tetracyclines, macrolides, chloramphenicol. Any questions? Ask your questions. Sir, if bacteriostatic antibiotics do not kill bacteria directly, how does the infection disappear? Good question. Remember our rat example. Bacteriostatic antibiotics stop the rats from reproducing. Once bacteria cannot multiply, the immune system has time to find and destroy the remaining bacteria. Sir, does bacteriostatic mean the bacteria will remain in the body forever? No. It only means the drug does not directly kill them. It holds them back, and then the body's immune system clears them. So how exactly do bacteriostatic antibiotics stop bacteria from multiplying? Many interfere with bacterial protein production. Without important proteins, bacteria cannot grow and reproduce properly. Sir, why not give bactericidal antibiotics all the time since they kill bacteria directly? Because the best antibiotic depends on the type of bacteria, the infection site, and the patient. Sometimes stopping bacterial growth is enough and very effective. Sir, how exactly do bactericidal antibiotics kill bacteria? They destroy structures or processes bacteria need for survival. For example, some damage the bacterial cell wall, causing the bacteria to break apart and die. Our topic today is pharmacokinetics versus pharmacodynamics. Now let's define and compare these two phenomena. Pharmacokinetics is the study of what the body does to a drug after it enters the body, including how the drug is absorbed,
distributed, metabolized, and eliminated. Pharmacokinetics is summarized using 4 main processes, which are absorption, distribution, metabolism, and excretion. Now, imagine a visitor entering a school. First, the visitor enters through the school gate. This is absorption. The drug enters the bloodstream. The visitor now moves around the school to different classrooms. This is distribution. The drug travels to different parts of the body. The visitor reports to the principal and gets processed. This is metabolism. The liver breaks down or changes the drug. Finally, the visitor leaves the school after finishing the work. This is excretion. The body removes the drug through urine, stool, and other routes. So pharmacokinetics is simply the journey of the drug through the body. Now that we understand pharmacokinetics, let us discuss pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the study of what a drug does to the body, including how it produces its effects and the relationship between drug dose and body response. Using the same school example, the visitor enters the school, but now what work does the visitor do? The visitor finds the problem and starts working. That represents the drug producing its effect in the body. This is pharmacodynamics. All right, who has a question on this? Sir, please, let's say a patient takes paracetamol tablets. What is the pharmacodynamic and pharmacokinetics in this case? Excellent question. Let's break it down. Pharmacokinetics explains how the paracetamol enters the blood, moves around the body, is broken down, and finally removed from the body. While pharmacodynamics explains how paracetamol acts in the body to reduce fever and relieve pain. Sir, if I swallow paracetamol, when does pharmacokinetics start? Immediately after taking it. Your body starts handling the drug by absorbing it into the blood, distributing it, metabolizing it, and later removing it. So, sir, at what point does pharmacodynamics start? When the drug reaches its target site and begins to produce its effect. For example, when paracetamol starts reducing fever and relieving pain. Our topic today is pharmacokinetics versus pharmacodynamics. Now let's define and compare these two phenomena. Pharmacokinetics is the study of what the body does. Our topic today is innate versus acquired immunity. But before we compare them, let us define them first. Innate immunity is the natural defense system you are born with that protects the body immediately against harmful organisms. Now, imagine your body is like a school. Germs are strangers trying to enter and cause trouble. The school has 2 types of security, innate and acquired immunity. First, let us understand innate immunity. Imagine the school has security guards at the gate. They have been there since the school was built. When any stranger tries to enter, the guards quickly stop them. They don't need to know the stranger's name. They attack any unwanted visitor immediately. This is innate immunity. You are born with this defense, and it responds quickly to general threats. Examples of innate immunity are skin, mucous membranes, inflammation, phagocytes, neutrophils, and macrophages, and natural killer cells. Now that we understand innate immunity, let us discuss acquired immunity. Acquired immunity is the defense system the body develops after exposure to a specific organism or through vaccination. Imagine the school creates a special security team. The first time a particular criminal enters, the team study the criminal. They create a special record of that criminal. The next time the same criminal returns, they recognize and attack faster. This is acquired immunity. The body learns a specific enemy and remembers it. Examples of acquired immunity are T lymphocytes, B lymphocytes, and antibodies. It's question time. Ask your question. Sir, if innate immunity works immediately, why do we still need acquired immunity? Good question. Innate immunity responds fast, but it attacks generally. It does not recognize specific enemies. Acquired immunity studies a particular organism and creates a targeted attack with memory. Sir, why is acquired immunity slower during the first infection? Excellent question. Because the special security team needs time to study the enemy, identify it, and prepare specific weapons like antibodies. After that, it remembers the organism and responds faster next time. So it's like memory? Exactly. Which immunity fights first when germs enter the body? Innate immunity responds first because it is already present from birth, like security guards already standing at the gate. Sir, why is skin considered innate immunity? Because you are born with your skin acting as a physical barrier.
It blocks many organisms from entering without needing to recognize them. So, what is the difference between B cells and T cells? B cells mainly produce antibodies that attack specific organisms. T cells help coordinate immune responses and can destroy infected cells. Our topic today is type 1 versus type 2 diabetes. But before we compare them, let me tell you what diabetes is first. Diabetes is a condition where the blood sugar level becomes too high, either because the body cannot produce enough insulin to help move sugar from the blood into the cells, or the body produces insulin, but the insulin cannot work properly to move sugar into the cells. There are two types of diabetes. The type 1 diabetes, also called insulin-dependent diabetes mellitus or juvenile onset diabetes, because it often starts in childhood or young people. The second type is type 2 diabetes, also called insulin resistance diabetes mellitus or adult onset diabetes, because it commonly develops in adults. Now let's compare the two. Type 1 diabetes is a condition where the body's immune system destroys the insulin-producing cells of the pancreas, causing little or no insulin production. Now, imagine the body cells are like a house. Glucose is a person carrying food. Insulin is the person holding the key to open the door. Normally, glucose arrives at the house. Insulin comes with the key. The door opens, glucose enters, and the body receives energy. Now, imagine glucose reaches the house, but there is nobody with the key to open the door. The glucose stays outside. The house receives no food. Sugar begins to build up outside. This is type 1 diabetes. The pancreas cannot produce enough insulin to open the cells for glucose to enter. Hence, glucose remains in the blood, causing high blood sugar. Type 2 diabetes is a condition where the body produces insulin, but the body cells fail to respond properly to it. This is called insulin resistance. Glucose reaches the house. The person with the key is available. The key enters the lock, but the lock refuses to open. The key is present, but it is not working well. So glucose remains outside. Sugar builds up. This is type 2 diabetes. The body produces insulin, but the cells do not respond properly. So it's question time. Ask your questions. Sir, if glucose is high in the blood, why do diabetic patients still feel weak and tired? Good question. In diabetes, glucose is in the blood, but it cannot enter the cells properly to produce energy. So the cells become hungry even when the blood sugar is high. Sir, in type 1 diabetes, what destroyed the person carrying the key? In type 1, the immune system mistakenly attacks the pancreatic beta cells that produce insulin. So the key maker is destroyed and little or no insulin is produced. Sir, can type 1 patients survive without insulin injection? Usually no. Since their body produces little or no insulin, they need insulin replacement. Without insulin, glucose remains in the blood while the cells lack energy. So they need daily injections? Yes, exactly. Sir, type 2 diabetic patients have insulin. So why is their blood sugar still high? Because having a key is not enough if the lock refuses to open. Their body produces insulin, but the cells are resistant. Our topic today is type 1 versus type 2 diabetes. Our topic today is placenta previa versus placenta abruptio. But before we compare them, let us define them first. Placenta previa is a condition where the placenta attaches too low in the uterus and partially or completely covers the opening of the cervix. Now, imagine a baby inside a room. The door of the room is the exit where the baby will pass during delivery. The placenta is like the baby's food supply bag attached to the wall. In a normal situation, the food bag is attached high on the wall. The door is free. Baby receives food and oxygen. And during delivery, the door can open. Imagine the food bag is attached too close to the door. The bag blocks the doorway. The baby's exit is covered. When the door begins to open, the bag may bleed. This is placenta previa. The placenta is in the wrong location and blocks the cervix. Now that we understand previa, let us look at placenta abruptio. The food bag was correctly attached high on the wall, but suddenly it starts peeling away before the baby comes out. Food and oxygen supply reduces. Blood collects where it's separated. The mother and baby become at risk. This is placenta abruptio. It's question time. Ask your questions. Sir, which one affects the baby more? Placenta abruptio usually threatens the baby faster because the placenta is the baby's oxygen supply. Once it separates, oxygen delivery reduces immediately. Sir, can a woman with placenta previa still deliver normally?
It depends on how much the placenta covers the cervix. If it completely blocks the baby's exit, vaginal delivery is unsafe and cesarean delivery is usually needed. Sir, can hypertension cause placenta previa? Hypertension is more strongly associated with placenta abruptio because high pressure can damage blood vessels between the placenta and uterus, increasing the risk of separation. And, sir, does ultrasound help to detect them? Ultrasound helps us see the position of the placenta. It can show whether the placenta is covering the cervix or whether another problem is present. Sir, can placenta previa become placenta abruptio? They are two different conditions. Placenta previa is a location problem. Placenta abruptio is a separation problem. Sir, what are the causes or risk factors of placenta abruption? Hypertension, preeclampsia, abdominal trauma, sudden loss of amniotic fluid, multiple pregnancy, and